Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 3 Animals, Birds. Here is some warm-up questions. Name these birds. Look here, here's some pictures. Look at these pictures and write down the name of these birds. Okay students, so you can do it by yourself. Here is, let's know about common Indian birds, body parts of bird, how birds fly, food habits, nesting habits of birds, some interesting fact about birds, looking after the young ones, caring for birds. So these are the points which we are discussed in this chapter. Okay student? Now we will start our chapter. Birds are beautiful animals that can fly. Their body is divided into three parts: head, trunk and a tail. They have two pairs of limbs, the legs and the wings. Birds have legs but no hands. Their wings, the mouth of a bird is called a beak. Their wings are covered with feathers. Many birds can fly with the help of their wings. The mouth of the bird is called a beak, but they don't have teeth. Following are the features that distinguish birds from other animals and themselves too. So स्टूडेंट क्या होता है, जो बर्ड है वो एक बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है जो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, और उनकी जो बॉडी होती है उसमें लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, लेकिन उनके हैंड नहीं होते हैं, और जो उनका माउथ होता है उसको हम बीक बोलते हैं, और उनके टीथ भी नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, feathers, beak, feet and claws. Birds are found everywhere. Each bird lives in its own habitat. Each bird lives in its own habitat. There are variety of local birds found in India. Common manna, Sindh sparrow, rock pigeon, Asian quail, tailor bird, coppersmith, barbet, Indian chat, laughing dove, parakeet, red-winged bulbul, spot, wild duck, Indian robin, etc. are some common birds found in India. So these are the birds which are found in India. That means ये सब birds कहाँ मिलती हैं बच्चे? इंडिया में मिलती हैं. Okay students, now body parts of a bird. The body of a bird consists of a head, a pointed or curved beak, eyes, wings, legs, feet and a tail. They have two pairs of limbs. The front limb are modified into wings. Their feet have claws for catching and holding things. Birds have feathers all over their body. Their mouth is called beak, but they don't have teeth at all. They have two holes called nares nostrils located on their beaks, through which they breathe. They have hollow and light bones, which make their body light. They help them to fly. Birds have strong flight muscles to which their wings are attached. These muscles help the wing to move up and down. Body is a streamlined that help them to fly. जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे. उनकी जो बीक होती है उसमें दो बहुत छोटे से होल होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जो उनके विंग्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं अप एंड डाउन जाने में. और जो बर्ड की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्ट्रीम लाइन शेप में होती है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अ पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. There is a bird, and in this picture every part of bird is mentioned. You can see here eye, near, beak, belly, claws, head or crown, wings, tail. These are the body parts of a bird. Do you know people who study birds are called ornithologists? Students, जो लोग birds के बारे में study करते हैं उनको ornithologist बोलते हैं. Here is, let's learn about different types of birds and their beaks, feet and claws and their feathers. Beaks. Since birds have no teeth, their beaks shape vary depending on the type of food they eat. Birds use their beaks to gather food, tear food into pieces, tidy their feathers, attack and kill enemies, feed their young, drink water, collect nesting materials, scratch their bodies. Okay? So क्या करती है बच्चा, ये सब वर्क किसकी हेल्प से करती है? बर्ड अपनी बीक की हेल्प से करती है. जैसे खाना इकट्ठा करना, अपने बच्चों को खाना खिलाना, पानी पीना, और अपनी बॉडी को स्क्रैच करना. ओके, सो दीज आर थिंग्स जो वो कैसे करते हैं, अपनी बीक की हेल्प से करते हैं. ओके, हियर इज काइंड्स ऑफ बीक. कोन शेप्ड beak.
Birds such as pigeon, sparrow, and peacock eat nuts and seeds. They have strong, short, and hard beaks that are used for cracking seeds they eat. Curved beak. Birds such as parrots and parakeets have hooked beaks that help them to crack open their nuts and hard fruits like walnuts. So आपके जो parrots होते हैं और इनकी कैसी beak होती है बच्चा? Curved beak होती है. Here is chisel or drilling beak. Birds such as woodpecker and hoopoe have long tapered beaks used for drilling holes in the hard trunk of trees and pull out insects to eat. So ये जो birds होते हैं उनकी जो beak होती है बच्चा वो drilling beak होती है. वो trees के अंदर से जो insects को क्या करते हैं बाहर खींचते हैं और खा लेते हैं. Okay, here is tubular shaped beak. Birds such as hummingbird and sunbird have thin, long and pointed beaks used for shipping nectar from flowers. So जो ये जो hummingbirds हैं या फिर sunbirds हैं उनकी जो beak होती है बच्चा वो pointed beak होती है और वो क्या करते हैं फ्लावर से नेक्टार को सिप करते हैं. ओके, हियर इज शार्प hooked beak. Owls, birds of prey such as eagle, vulture and hawk have deeply hooked beaks used for ripening and tearing meat. Okay, here is straining beak. Birds such as duck, swan and goose have flat-shaped beaks with tiny holes on both sides to filter plants and small insects, worms and small plants from water. So students ये क्या होते हैं? ये कुछ आपके जो है birds हैं जिनकी जो beak है वो straining beak होती है. Okay? Now probing beak. Birds like ibis, curlew, snipe and godwit have long slender bills that are used to probe in mud and shallow water for worms, crustaceans and insects. So बच्चा जो आपकी जो birds हैं इनकी beak क्या होती है? Probing beak होती है. वो probe किस में करते हैं? Mud में या फिर shallow water में. किसके लिए? Worms के लिए. Okay. Here is spear beak. Birds like herons, egret and kingfishers have spear-shaped beak adapted for fishing. So ये जो आपकी birds होती है बच्चा इनकी beak कैसी होती है? Spear beak होती है. किस लिए? क्योंकि वो fishing करते हैं. Here is special beak. Spoonbills, pelicans, skimmers, etc. have flattened, long or pouch-like bills that they use to scoop up fish and other aquatic creatures. All-purpose beak. Birds like crows, robins and thrushes exhibit a generalized type of beak adapted for a wide diet. They have all-purpose beak that allow them to eat fruits, seeds, insects, fish and other animals. Different birds have beaks with different shapes which helps them to eat different kinds of food. Here is a table, student. Look at this table. In this table, bird, beak, shape of the beak and purpose of the beak. So you can read it by yourself. Look at the first one, that is eagle. In the picture, the shape of beak is shown and here it has a strong, sharp and hooked beak. The shape helps eagle to catch animals as it flies. Next one is parrot. It has sharp and curved beak. The shapes helps crack nuts and seeds and to tear fruits. Next one is duck. It has a flat and broad beak. The shape helps it to catch fish and worms in the water. Sparrow. It has a small pointed beak. The shape helps it to pick small grains. So these are the type of beak and the purpose. Okay, students? And the last one is hummingbird. It has a straw-like long and slender beak. The shape helps it to suck nectar from flowers. So उसकी beak इसलिए ऐसी होती है क्योंकि उसे suck करना होता है nectar किससे बच्चा? flowers से. Here is we have check and mate as we already read about these things, so you can solve it by yourself. Now we have an activity. Match each bird's beak given below to its use. So you can do it by yourself. You have to match the beak of bird to its use. Okay, students? Here is feet and claws. All birds have 2 feet and 4 toes. The feet and claws help the bird walk, hop, run and perch, swim, wade through water and catch food. They also provide protection to the birds from their enemies.
Different birds have different kinds of feet to help them live in their surrounding or gather food. So बच्चे जो हमारी birds होती हैं उनके different टाइप के क्या होते हैं feet होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें उस टाइप के सराउंडिंग में क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है. ठीक है स्टूडेंट. और जो हमारी बर्ड्स होती है उनके 2 फीट होते हैं और 4 टो होते हैं. ओके. नाउ डू यू नो द हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स बट इट कांट वॉक. जो आपकी हमिंग बर्ड है बच्चा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती है लेकिन वो चल नहीं सकती. Condor cells are so thick it can take a week to break out from its cell. और कॉन्डोर सेल्स क्या होती हैं, वो बहुत थिक होती हैं और वो अपने सेल से बाहर आने में कम से कम 1 वीक लेती हैं. ओके स्टूडेंट्स. Here is kinds of feet and claws. Perching birds. Birds such as crow, sparrow, parrot and merle use their feet for perching and walking or hopping. 3 toes pointing forward, one opposing toe helps them grasp their perch. So क्या होता है बच्चे, ये जो आपकी जो क्रो है, स्पैरो है, पैरेट है, उनके फीट कैसे होते हैं, पर्चिंग फीट होते हैं. ओके. और उनके 3 टोज होते हैं वो पॉइंटिंग होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 1 किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में. और वो क्या हेल्प करता है उनकी किसी चीज को ग्रैस्प करने में. ओके स्टूडेंट. हियर इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. Birds such as woodpecker and parrot have 4 toes, 2 pointed forward and 2 pointed backward. This arrangement helps them grasp tree bark and climb up. So students, जो climbing birds होती हैं उनके 4 toes होते हैं जिसमें से 2 pointed forward होते हैं और 2 pointed backward. ये अरेंजमेंट उनकी हेल्प करता है क्लाइंब करने में. ओके. Here is flesh eating birds. Hawks, eagles and owls have strong feet with long claws or talons to help them capture, grasp and kill their prey. Next one is scratching birds. Birds such as hen and roosters have strong feet with 3 toes in front and 1 toe at the back, with hard and sharp claws that help them scratch and dig the ground in search of seeds and worms. तो बच्चे जो आपकी हैन या रोस्टर जो बर्ड्स होती हैं उनके जो फीट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, उनकी आपकी जो अर्थ है उसको डिग करने में और उसमें से सीड या फिर कोई वर्म को फाइंड आउट करने में. हियर इज wading birds such as cranes and herons have long toes to help them walk through soft bottoms in wetlands in search of food. So जो आपकी इस टाइप की बर्ड्स होती है बच्चे उनके जो फीट है उनकी हेल्प करते हैं वेटलैंड्स में क्या करने के लिए, फूड की सर्च करने. Here is swimming birds. Swimming birds such as ducks and geese have webbing between their toes to help them paddle in water and to move forward. Paddle type feet होते हैं, उनके जो feet होते हैं उनके बीच में webbing होती है और वो किस में help करते हैं, water में उनका paddle करने में help करते हैं. Here is different kinds of feet and claws. First one is woodpecker types of. Look at this picture. Purpose of the feet, it has 2 toes in front and 2 at the back. It has long curved claws. This shape helps them to climb and hold on the trees. So बच्चे look at this picture. This is the shape of feet of woodpecker. बच्चे क्या होता है कि ये इसलिए ऐसे होते हैं ताकि वो क्या कर सके, आपके ट्रीज को होल्ड कर सके और उनपे ऊपर जा सके. ओके. Now next one is duck. Look at this picture. This is the type of feet. It has 3 toes and are webbed together. It has little toe at the back. This shape helps them to swim as they use their feet to push against the water and move forward. So बच्चे ये जो shape है उनकी help करती है किसमें, water के against push करने में और आगे forward direction में जाने में. Okay, here is vulture. Look at this picture. This is the feet of a vulture. It has 4 toes with sharp claws. The claws help to catch small animals. तो उसमें जो vultures के जो feet हैं वो कैसे होते हैं बच्चा, sharp claws होते हैं और वो किसमें help करते हैं, छोटे animals को catch करने में. The next one is sparrow. Look at this picture. This is the type of feet of a sparrow. It has 3 toes in front and 1 at the back to hold on the branches tightly. बच्चे इसमें क्या होता है, इनका पर्पस ऐसे क्यों होते हैं ताकि वो ब्रांचेस को टाइटली क्या कर सके बच्चा, होल्ड कर सके. Here is crane. Look at this picture. This is the type of feet of a crane. It has long legs and 4 toes.
are spread. This helps them to walk near the banks of the rivers and lakes to eat fish. ये जो फीट है क्रेन के वो किसमें हेल्प कर, नदी के जो किनारे वो चल सके और वहां से क्या कर सके, मछलियों को जो है खा सके. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रेन फीट. ओके, जो क्रेन के फीट होते हैं बच्चा वो इस टाइप के इसलिए होते हैं ताकि वो क्या होते हैं, वो फिश खाते हैं. ठीक है, तो वो जो रिवर का जो साइड होता है, दैट मीन्स किनारे पे वो चल सके, तो वो किनारे पे उनके चलने में हेल्प करते हैं और उससे वो वहां पर अपने आप को क्या करके खड़ा करके वहां से फिश को खाने में भी उनकी हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव feathers. All birds grow feathers, making them different from all other animals. The different type of feathers help a bird survive. Feathers not only help a bird to fly or swim, they also protect its sensitive skin, help attract mates, serve as insulator to trap body heat, serve as camouflage. ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है, जो बर्ड के जो फेदर्स होते हैं बच्चा, वो उनकी सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या उनके मेल जो है मेल बर्ड होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, जो उनकी बॉडी पे जो हीट आती है उससे उसको बचाते हैं और कैम्फ्लेज में भी उनकी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ डू यू नो an ostrich can run as fast as 43 miles per hour and grow as tall as 9 feet. Bluebirds can't see the color blue. So जो आपके ऑस्ट्रिच है बच्चा वो 43 माइल्स पर आवर रन कर सकते हैं और 9 फीट तक क्या हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, 9 फीट टॉल हो सकते हैं. और जो आपकी ब्लू बर्ड्स होती हैं उन्हें ब्लू कलर दिखाई नहीं देता है. ओके, नाउ feathers are held together and in place by a hollow tube called the shaft or rachis. The shaft is made of a very hard material called keratin. Each bird has different kinds of feathers that help it do different things. So बच्चे क्या है, जो birds हैं उनके feathers अलग अलग टाइप के होते हैं और वो अलग अलग चीजें करते हैं. ठीक है, जो उनकी shaft बनी होती है birds की वो बहुत hard material जिसको हम keratin बोलते हैं उससे बनी होती है. Okay, there are following 3 kinds of feathers. First one is flight feathers. Flight feathers helps birds to fly. They are found on the wings and the tail. So बच्चे जो आपके flight feathers हैं वो कहाँ मिलते हैं, wings और tails में, और वो birds के किस में help करते हैं, fly करने में. Okay, here is body feathers. Body feathers are colored feathers which cover the body of the bird. So बच्चे जो उनकी बॉडी के फेदर्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और उनकी पूरी बॉडी को यानी कि बर्ड की जो बॉडी है उसको कवर करते हैं. ठीक है, here is down feathers. Down feathers are the soft and fluffy feathers found close to the body of a bird. They help birds to keep their body warm. So बच्चा जो डाउन फेदर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और जो आपकी बर्ड है उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं. ओके, नाउ how birds fly. The body of a bird is designed in such a way that it can fly easily. They have small feathers covering their whole body. The following features help it flying: a pair of wings, strong flight muscles, light hollow bones, streamlined body, thin in the front and broad in the middle, feathers in the body and tail. तो ये सब क्या है बच्चे, ये चीजें हैं जो आपकी बर्ड की हेल्प करती हैं फ्लाई करने में. उसके पेयर ऑफ विंग्स, उसके स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, होलो बोन्स एंड जो उसकी बॉडी की शेप है जो थिन होती है बच्चा फ्रंट में और ब्रॉड होती है मिडल में, और उसके फेदर्स. ओके, नाउ इट हैज strong flight muscles attached to its hollow bones which gives power to the wings. So जो बच्चा आपकी फ्लाइट मसल्स हैं बर्ड्स की वो किससे अटैच होती है, होलो बोन से, और वो उसको क्या पावर करती है, उसके विंग्स को पावर देती हैं. They are two special type of stalks of the wings that allows the birds to fly. आपके 2 स्पेशल टाइप होते हैं स्टॉक्स के विंग्स के जो बर्ड की फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. We have upstalk, the upward and backward movement of wings. So upstalk क्या है बच्चे, upward और backward डायरेक्शन किसकी बच्चा, विंग्स. Downstalk, the downward and forward movement of wings. The tail of a bird helps it to change direction while flying. So बच्चा अप स्ट्रोक क्या करता है, आपकी अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करता है. डाउन स्ट्रोक आपकी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करते हैं.
जो आपकी टेल होती है, जब बर्ड फ्लाई कर रही होती है तो उसकी जो डायरेक्शन बच्चा जो चेंज होती है वो कौन हेल्प करता है? बर्ड की टेल हेल्प करती है. Look at this picture. In this picture, the bird is flying. Now we have check and mate. As already we read about these things, so you have to do it by yourself. Nesting habits of birds. Birds are among few other animals that build their own homes. Different birds make different types of nests. Their nesting places also vary. They build nests to lay eggs in and raise their young ones. The nests are built in safer places. Let's now study about the nest of some of the birds. So बच्चे, हमारी जो बर्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के क्या बनाती है? घोंसले बनाती है. और वो मेनली किस लिए घोंसले बनाती है? जो उनके जब वो अंडे देती हैं और जो उनके यंग वंस हैं वो जब बड़े हो रहे होते हैं उसके लिए वो मेनली घोंसला बनाते हैं. ठीक है, हर एक बर्ड एक डिफरेंट टाइप का घोंसला बनाती है. ओके, अब हम डिफरेंट बर्ड्स के नेस्ट के बारे में रीड करेंगे. नाउ the first one is the sparrow and the pigeon. The sparrow and the pigeon make their nest with grass, leaves, feathers, etc. They make them on trees or in houses at any safe place. So आपकी जो sparrow और pigeon है वो किसकी हेल्प से बनाते हैं अपना नेस्ट बच्चा? ग्रास, लीव्स और फेदर्स की हेल्प से. और वो या तो उसको ट्रीज पे बनाते हैं या फिर घर में किसी सेफ प्लेस पे. ओके, the next one is bulbul. A bulbul's nest can be found in hedges and bushes. The nest is cup-shaped. This prevents eggs or baby birds from falling out. So बच्चा, जो आपके बुलबुल के नेस्ट होते हैं वो बसेस में मिलेंगे या फिर हैजेस में. और जो नेस्ट होता है वो कप शेप का होता है और वो किससे प्रिवेंट करता है? एग ना गिरे और उसका जो यंग वंस है वो भी उससे नीचे ना गिर जाए. ओके, वीवर बर्ड. The weaver bird uses dry twigs, grass, fine pieces of straw to make a very big and strong nest by pulling the grass in and out. The nest hangs from the branch of a tree. The bird enters and comes out through a tunnel-like opening at the end of the nest. तो बच्चे, आपकी जो वीवर बर्ड होती है वो बहुत बड़ा नेस्ट बनाती है ग्रास, फाइन पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, इन सब की हेल्प से. और जो उनका नेस्ट होता है बच्चा वो ट्री पे जो होता है हैंग होता है. ठीक है, किसी ब्रांच पे या कहीं भी वो कुछ इस टाइप का होता है. और जो बर्ड उससे निकलती है बच्चा, वो बर्ड कैसे निकलती है? उससे एक छोटी सी ओपनिंग वो बर्ड उसमें टनल लाइक ओपनिंग बनाती है. ओके, द टेलर बर्ड. The tailor bird make their nest with long leaves. They stitch two large leaves together with bit of thread, straw and dry twigs. The nest is lined and material like cotton, wool, grass and hair to keep the nest cozy. So जो आपकी टेलर बर्ड होती है बच्चा वो किससे बनाती है? ग्रास, थ्रेड और कॉटन, वूल, ग्रास, इन सब चीजों से वो अपना नेस्ट बनाते हैं. The swallow bird. The swallow bird builds its nest using its own spit. The nest is made attached to rocks or woods or resemble the shape of a vase. तो जो आपकी swallow bird होती है बच्चा वो अपने स्पिट से ही अपना नेस्ट बनाती है और वो या तो किसी रॉक से अटैच होता है या किसी वुड से. और उसकी शेप कैसी लगती है? किसी वेस्ट के जैसी लगती है. The woodpecker. The woodpecker makes holes in the trunks with their kissel-like beaks to make their nest. They use chips of wood to make their nest warm and cozy. तो बच्चे वो क्या करते हैं? ट्रंक को होलो करते हैं और उसके अंदर रहते होते हैं. ठीक है, और जो उनका नेस्ट होता है उसमें वो वुड के कुछ छोटे मोटे टुकड़े रखते हैं ताकि वो जो है गर्म रहे. ओके, cuckoos are lazy birds. They do not build their own nest. They leave their eggs in नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स. सो जो आपकी कोयल बच्चा जो होती है वो बहुत लेजी बर्ड होती है. वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और जो अपने एग है वो किसी और बर्ड के नेस्ट में जाकर क्या करती है? किसी और बर्ड के नेस्ट में रखती है. ओके, हियर इज द पेंगुइन. द पेंगुइन too does not build a nest. It lays its eggs on a platform of stones on the ground. The male penguin then holds the egg between its feet and lower belly and hatches. So बच्चा, जो आपकी पेंगुइन है वो भी कोई नेस्ट नहीं बनाते हैं. वो कहाँ आपके वो अपने अंडों को कहाँ रखती है? ग्राउंड पे, जहाँ कहीं थोड़े बहुत पत्थर हो. और जो मेल पेंगुइन होता है वो उनके अपने पैरों के बीच में होल्ड करता है और अपनी बैली और अपनी हैचेस के बीच में छुपा लेता है. ओके, नाउ the quail is clever but very lazy bird. It does not build its own nest.
It lays its eggs in the nest of a crow. When the crow is away, the crow takes care of these eggs, thinking that they are its own eggs. It even feeds the baby birds on hatching. बच्चे जो कोयल होती है वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रख देती हैं, और जो आपके क्रो होते हैं वो उन अंडों को क्या करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और जब वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको फीड भी कराते हैं. ओके, birds take care of their young ones. Once all the eggs are laid, the parents guard the nest. Soon baby birds hatch out of the eggs. They are tiny, weak and without feathers. The process by which the shell of the egg breaks and the baby birds come out is known as hatching. The parents feed them and protect them from enemies and bad weather. The baby birds grow very fast, develop feathers, become strong. They learn to fly and look for food either from their parents or on their own. ओके, सो क्या होता है, जब जो आपकी बर्ड्स हैं वो एग देते हैं, उसके बाद वो उन एग्स को कुछ दिन के लिए अपने घर में या अपने घोंसले में रखते हैं. धीरे धीरे वो एग जो है ब्रेक होता है, उसमें से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है. वो छोटी सी बर्ड होती है, उसके फेदर्स नहीं होते हैं. धीरे धीरे वो उसको टेक केयर करते हैं, उसे उस घोंसले में रखते हैं. जब वो बड़ा होता है तो उसके फेदर्स आ जाते हैं और वो उनको फीड कराते हैं. बर्ड्स जो होती हैं वो अपने बेबी को फीड कराती हैं और फिर धीरे धीरे वो जो है उड़ना सीख जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ या फिर उनसे अलग खुद से अपना खाना जो है वो लेकर आने लगता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ केयरिंग फॉर बर्ड्स. Like other animals, birds too need to be looked after, especially during hot summer months. Placing birds' baths in open places around the houses or gardens are one way of helping thirsty birds. Birds drink water, bath and cool themselves in these birds' baths. Along with birds' baths, we should place bird feathers containing seeds to feed the hungry birds. Pets that you have at home should also be taken good care of. Feed them regularly, clean and bath them, be kind to them and take them to a veterinary doctor to vaccinate them or when they are sick. So student, क्या है, हम बर्ड्स की केयर कैसे कर सकते हो. जैसे देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पे, लाइक अपनी छत पे या अपनी बालकनी में, आप किसी एक बर्तन में पानी रख सकते हैं ताकि जब बर्ड्स को प्यास लगे वो वहां से पानी पी ले. जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, नहाते हैं या पूजा करते हैं घर में, तो उसके बाद आप थोड़े से कोई दाना, लाइक कोई बाजरा हो गया या गेहूं, वो आप डाल सकते हैं ताकि बर्ड्स क्या कर सके, बच्चा फीड कर सके. सो ये आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बर्ड्स की हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे हम अगर सपोज किसी के घर में पैरट है या फिर पीजन है तो क्या करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, रेगुलरली उनको बात देना चाहिए और टाइम टू टाइम उन्हें वैक्सीनेट कराना चाहिए. What we read in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, a bird's body is divided into three parts: head, trunk and a tail. जो बर्ड की जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है स्टूडेंट? 3 पार्ट्स में, head, trunk and tail. They have 2 pairs of limbs, the legs and the wings. Birds have legs but no hands. बर्ड जो है उसके जो लिम्ब है बच्चा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लेग्स और विंग्स. और बर्ड्स की लेग होती है लेकिन हैंड्स नहीं होते. Their forelimbs are modified into wings and are covered with feathers. Many birds can fly with the help of their wings. So क्या होता है, जो आपकी बर्ड्स हैं उनके जो forelimbs है वो विंग्स और फेदर्स में क्या हो जाते हैं बच्चा, मॉडिफाई हो जाते हैं. और बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं किसकी हेल्प से करती है, विंग्स की हेल्प. The mouth of bird is called the beak, which is used to eat insects, seeds, nuts, grains and fruits. All birds have 2 feet and 4 toes. The feet and claws help the bird walk, hop, run and perch, swim, wade through water and catch food. Birds build nests to lay eggs and raise their young ones. We can care for the birds by placing bird bath and bird feeders for hungry birds. Now we have keywords. Here is habitat, natural home of animals. Streamline, to shape something so that it can move as effectively and quickly as possible through air or water. Perch, sit or rest on something. Veterinary, animal doctor. Thank you students, we will meet again.